sentences, true phrases, or true clauses, right, as well. So guys, in conjunctions, we have learnt about fanboys, for, and, nor, but, or, yet, and last, so. Fanboys, right? I hope you remember these fanboys. Pretty cool weather in Delhi. विकास कौन सी दिल्ली में यहाँ धूप निकल रही है, weather कहाँ से good है? No, it's not good. Taroop, you are raising your hand. Ma'am, you have told that conjunctions are 3 types. Yes, And I think correlative and yes, subordinate हमने नहीं पढ़े. Yes, ma'am. इसमें मैंने टॉपिक ढूंढा था, मुझे नहीं मिला. Taroop, yes. So let's see. या तो किसी इसमें देखना पड़ेगा. So अभी हम common errors पढ़ लेते हैं फटाफट. First slide. Yes, ma'am. Pick the correct translation of वो मोटा है पर वह पूरी कक्षा से तेज भागता है. Although he is fat, still he runs faster than his entire class. Or although he is fat, comma, he runs faster than his entire class. Ma'am, I request you that you tell all students that anyone don't personal chat in comment box. रौनक, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ जब मुझे कोई कमेंट पर्सनली दिखता है करते हुए. So do not worry about it. Abdul Mateen, please answer. Aniket. Although he is fat, he runs faster than his entire class. Yes. So guys, still यहाँ पे नहीं आया. May I know the reason why still is not here? May I, ma'am? Yes, Taru. Because although is already here, so we don't have to use two conjunctions. Exactly. So guys, although is already here, although still कभी काफी meaning same होता है, हालांकि फिर भी still जैसे होता है फिर भी. So they are kind of same in the meaning. So यहाँ पे हम दो conjunctions का use नहीं करेंगे. Although he is fast, he runs faster than his entire class. ठीक है? Although हमारा join कर ही रहा है already. Okay? Very well done. Adjectives are not done yet. मैं वही पूछ रही थी. चलिए कल करेंगे. Next slide. Pick the correct sentence. He did not come to school because he was down with jaundice. Or he did not come to school, comma, because he was down with jaundice. So guys, यहाँ पे आपका punctuation है. Full stop के बाद because आएगा या comma के बाद because आएगा. So please choose the answer carefully. Ma'am, have you changed your map? Why Dharmik? Why are you asking this question? Where is Karthik? I think Karthik को कल वाली बात से बुरा लग गया है and he's not going to attend sessions for few days. कार्तिक का हमेशा का है. PK Soumya, please answer. Second one, ma'am, he did not come to school because he was down with jaundice. Yes, guys, because से पहले full stop नहीं लगेगा. Remember, conjunctions का काम दो sentences को join करने का है. अगर हम यहाँ पे full stop लगा रहे हैं तो हमारा एक sentence खत्म हो गया, तो उसमें because का फायदा क्या है, right? So full stop नहीं लगाना, हमें एक independent clause चाहिए. Dependent clauses नहीं चाहिए दो. अगर हम full stop लगा रहे हैं तो ये दो dependent clauses हो गए हैं, but we need one independent clause, which is he did not come to school because he was down with jaundice. Down with jaundice. What is the meaning of this? What is jaundice? Liver problem. What, Krishna? No. Pilia, ma'am. Pilia. Harshika, बहुत रही है. Mute yourself. Right. So guys, हिंदी में जो पीलिया होता है उसे jaundice इंग्लिश में बोलते हैं. तो यहाँ पे he has jaundice, और we have jaundice नहीं बोलते, down with jaundice बोलते हैं. ठीक है?
he was, now we are talking about past, he did not come to school, वो school नहीं आया था क्योंकि he was down with jaundice, right? Next slide. Choose the correct answer. No sooner than having spoken these words, he left. No sooner I had spoken these words, then he left. Sooner. Then he left. ये बहुत ना what should I say, अजीब सा sentence है, means it's bit different, it's not like जो normal sentences होते हैं हमारे easy वाले, it's a bit difficult because if you I had praised you, if I had praised you today, had के साथ today तो आएगा ही नहीं, if I praised you आएगा, had नहीं आएगा, so might be your answer would be, might be भी है और would be भी है, so your answer might be भी लगा सकते हैं, would be वो आपकी मर्जी है, दोनों साथ में नहीं आएंगे. I'm looking because of math. अच्छा, I'm looking good because of math. Okay. Full smile just grin. Krishna, please answer. No sooner than having spoken these words, he left. Right. What is the meaning of the sentence? No, ma'am. Someone? No idea? No idea. Yes, yes, Tarun. As soon as I spoke this word, he left. Definitely. So guys, यहाँ पे as soon as जो हम use करते हैं, तो यहाँ पे हम as soon as की जगह use कर रहे हैं no sooner than. Having these words spoken or having spoken these words, he left. मेरे कुछ बोलने से ही पहले वो चला गया. This is the Hindi of this sentence. Okay. So यहाँ पे conjunction क्या है हमारा? No sooner. No भी है. Sooner. Sooner only. Sooner. और कोई बताएगा? या सब agree करते हैं that sooner is the conjunction here? No idea. Guys, यहाँ पे conjunction then है, THAN then. Soon या sooner adverb होता है, ये नहीं होता conjunction, ठीक है? तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए. Then, फिर, then is your conjunction. क्योंकि then हमारे दो sentences को यहाँ पे जोड़ रहा है. Next slide. Choose the correct answer. This year, I have bought many fireworks such as rockets. This year, I have bought many fireworks as rockets and etc. Have नहीं होगा कुशांत, has होगा. Has anyone? Speak my name loudly. Prime Minister है, आपका name loudly लिया जाए. Kushant, please answer. This year, I have bought many fireworks such as rockets. Yes, इस साल मैंने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं such as rockets. Now guys, why we are not using and etc? एप्लीकेशन के लिए Such as rockets. Because such as is already there. So, guys, first of all, and के बाद सीधा etc नहीं आएगा. और etc हम कब यूज करते हैं? हम दो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं. For example, my mother wants me to buy eggs, bread, butter, etc. for breakfast.
तो जहाँ पे हम एक दो चीजों के बारे में बात करते हैं वहां पे हम एटसेट्रा लिखते हैं, स्पेशली दो तीन, तीन से ज्यादा भी हो सकती है, वो मर्जी है, लेकिन दो तो मिनिमम होनी चाहिए ना, तभी तो एटसेट्रा लगेगा। रॉकेट्स के साथ एटसेट्रा कैसे लग जाएगा, राइट? दिस ईयर आई हैव बॉट मेनी फायरवर्क्स सच एज रॉकेट्स, और जो भी होते, और क्या क्या होते हैं, अनार को क्या बोलते There are हैं? sky shots. स्काई शॉट्स, यस, एटसेट्रा उसके बाद लगता है। और यहाँ पे एंड तो आएगा नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सच एज आवर कंजंक्शन, राइट? यहाँ पे होता रॉकेट्स एंड स्काई शॉट्स एटसेट्रा, तब ये ठीक होता। Delhi people doesn't need any fireworks because they already. People don't need, people is a plural word, don't need any firework. Why? Because you already have so much of smoke. Smoke and pollution, right? Ma'am, when we use etc in any word, then we don't use and, I think, such as rocket. Exactly, उसमें कॉमा आता है, such as rockets, Ma'am, do you comma, like sky shots, fireworks? etc. Okay, ma'am. Because name of some more crackers. Yes, Smita. Next slide, guys. Pick the correct translation of मुझे सारे खेल पसंद है जैसे कि hockey. I am fond of all outdoor games, as for an example hockey, or I am fond of all outdoor games, for example hockey. As for an example or only for example? Don't worry, Ravina, he won't be able to chat anything anymore. Okay, next we have Pratap. Please answer. Yes, ma'am. I am fond of all outdoor games. For example, hockey. Okay, fond नहीं, fond, फ का साउंड निकालिए प्रताप, fond of, बोलिएगा, बोलिए। I am fond of all outdoor games. For example, hockey. Or for example, hockey. Okay, all नहीं, all, मुंह ऐसे होना चाहिए, all. Of all outdoor games. For example, hockey. Right. Ma'am, why I'm using comma after example? We can use comma after example or hyphen. Okay, शिव, जब भी हम for example लिखते हैं, for example के बाद या तो हम hyphen लगाते हैं, वो जो छोटा सा dash होता है, या फिर comma लगता है. Okay? इस चीज का ध्यान रखिएगा. So, I am fond of all outdoor games. Fond का meaning क्या होता है, guys? Fond of, बताइए. Like, ma'am. Like something you like the most, उसके लिए भी हम use करते हैं. You like something very much, so I am fond of. Instead of saying I like or love, we can say fond of. I am fond of. Yes. For example, hockey. Not for such an example. क्या था? As for an example, hockey. सिर्फ हमारा फॉर एग्जाम्पल काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल में गाइस आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 10 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. ओके मैम, टुडेज क्लास इज डिफरेंट. रौनक, चाहती क्या हो, पहले ये बता दो. Next slide. Choose the correct sentence. He called me as a fool for believing you, or he called me a fool for believing you. Very simple, guys. So as Kushant, you have been attending other sessions since morning. So I want to know, was he there in the other sessions? No, ma'am, he wasn't. So he is busy today. Ma'am, I'm just making like fun. What? Ma'am, I'm just like having fun in the chat box. Nothing much. I know he must be busy somewhere. He must be. He's not like the child that he was, like not here because of yesterday.
then words, madhab, chaudhary, then words नहीं होगा, these words होगा, या those words. चलिए, Priya, please answer. Yes, ma'am. He called me a fool for believing you. Very good. So it's a fool, बेवकूफ. उसने मुझे बेवकूफ बुलाया तुम पर यकीन करने के लिए, for believing you. Not he called me as a fool. As a fool, हम compare नहीं कर रहे हैं. As is a simile. For example, you are as fool as donkey, right? तो वो simile में हम as का use करते हैं जब हमें compare करना होता है. But here we are using he called me a fool for believing you. Next slide. Choose the correct sentence. He is the fastest runner, but he came last in the marathon. He is a faster runner and he came last in the marathon. So guys, but or and, which is the right conjunction here. Madhav, listen ki spelling thi kariye, then I will listen to you. It should be L-I-S-T-E-N. Beatrice learners are asking the questions. School means Pitu. Actually, no one is asking any question, but they should if they are not able to understand anything. Guys, जो भी confusion है अभी clear कर लीजिए. All right. Roshan, please answer. He is the fastest runner, but he came last in the marathon. Right, guys, यहाँ पे end नहीं आएगा. अस्मा, तरला, GK, NK, रोशन, अथर. यहाँ पे end क्यों आएगा? End when we use end. Sorry, where we use end when we want to talk about two things. For example, he is the fastest runner and he wins all the marathons. So faster. Fastest की जगह slowest होता, then we can use end. Exactly. He came last in the marathon, of course. So guys, हम same बात करें तब, but कब होता है जब हम contradict करते हैं. So यहाँ पे हम contrast में बात कर रहे हैं that he is the fastest runner, but he came last in the marathon. वो fastest runner है, पर वो last आया marathon में. Marathon means लंबी दौड़. Marathon means race. Okay. जी, रेस को मैराथन बोलते हैं. Are you listening me भी गलत है. Are you listening to me? Oh, thank you, Priya. Next slide. Pick the correct translation of वह गुस्सा था इसलिए मैं उसके घर से भाग गया. He was angry, so I ran away from his house, or he was angry so that I ran away from his house. Simple. Easy peasy hai. Vishakha, why you are not able to join? Chaliye. Sachin Kumar Agrahari. Answer. He was angry, so I ran away from his house. Yes, we don't need that. So that. So is enough. अपना काम so आराम से कर रहा है because so is a conjunction. Fanboys वाला last जो है वो so है, right? He was angry, so means इसलिए यहाँ पे because नहीं use होगा. So I ran away his house. अगर that का use करना है तो guys that's why use होगा यहाँ पे. That's why I ran away from his house. But because we are learning conjunction and that's and why is not a conjunction, that's why we are using so. So I ran away from his house. So we use so for consequences. Tip मिलिए tip. Ma'am, could you pronounce my surname again? Agrahari. Again? Agrahari. What is wrong in that? This is the right pronunciation, right? No. What is then? Tell me.
अग्रहरी. अच्छा, अग्रहरी. Oh, अग्रहरी. Okay. My bad. पहली बार सुना है मैंने ये सरनेम, पहले कभी नहीं सुना. Anamta ma'am was angry, so I ran away from her house. रवीना, आपने मैम का एम तो कैपिटल कर दिया, अनमता का ए कैपिटल नहीं करा आपने. चलिए, next slide. Choose the correct sentence. This is my friend. He went to school with me when I was young. This is my friend who went to school with me when I was young. He went or who went? She will never invite you to at her home. At क्यों आया यहाँ पे कुशान? She will never invite you to her home or her place. Sajil. This is my friend who went to school with me when I was young. Yes, so guys, whenever we talk about people, जो हम जब इंसान के लिए बोलते हैं ना, जो ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था. This is who I told you about or something like that. So यहाँ पे भी हम फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो who went to school with me when I was young. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है हमारा, बताइए. Who, WHO. Two. मैम हु कंजक्शन दो को जोड़ने के लिए बात कर रहा है. Exactly. आपकी आवाज. यस मैम. अर्शिका म्यूट. यस, आपका जब माइक ऑन हो रहा है ना तो वो वापस आ रहा है. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है. सो गाइस, यहाँ पे WHO हु यहाँ पे जोड़ रहा है. किसी ने TO2 बोला था, तो मैं पहले बता दूं, टू या तो हमारा NO नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है. ठीक है. I think, ma'am, in this sentence two conjunctions are used. Who and with. To and with. Yes, ma'am. एक मिनट रुकिए. With also conjunction. Preposition होता है. नहीं. True preposition होता है या adverb होता है, conjunction नहीं होता. This is my friend with, guys, with. Who means जो हो गया. With is your conjunction. With के साथ. With जो मैम join कर रहा है. This is my friend who went to school. ये एक आपका sentence हो गया. With me when I was young. तो with दो sentences को join कर रहा है. मैम सौम्या. who is a relative pronoun ना in Yes, here. who is a relative pronoun. Conjunction नहीं है. You are right. Relate करते हैं हम, जो relate कर रहे हैं हम, right? और it's a WH family as well. Next slide. Pick the correct translation of जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा था वो मुझे परेशान कर रहा था. At that time I was trying to work, he was disturbing me. Or while I was working or I was trying to work, he was disturbing me. You are stunningly beautiful. So stunningly यहाँ पे adverb है जो दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. ओके. Stunningly means बहुत ज्यादा and then beautiful. With is conjunction नहीं मैम, with is a conjunction. Shiv, please answer. Ma'am, slide coming late in my screen, so I can't. It's okay. Sumit. I'm not able to visual this slide. No problem, Shiv. Sumit, Because- are you there? No, Sumit is sleeping. Tarla. While I was trying to work, he was disturbing me.
So guys, while, not at that time. क्योंकि while हमारा conjunction है which is appropriate to use. While हम कब use करते हैं? किसी काम के दौरान. For example, he was talking while watching the movie, or he fell asleep while taking the lecture or during the lecture, right? So while I was trying to work, जब मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, he was disturbing me. सतीश, शीतल, जीके, फिरोज, चौधरी, चिराग, incorrect response. Any question, guys? Perfect. Next. Pick the correct sentence. This is the house where I have lived all my life, or this is the house, comma, I have lived all my life. I have lived here all my life. Easy peasy, easy peasy. I live in India, but I don't like it. Asma Sajjad, it's not right to say that you don't like it. There are many things that India, we can dislike India, but we should not say it. अपने मुल्क से प्यार करना हमें हमारा मजहब सिखाता है. So yes, चलिए next. Taroob. This is the house where I have lived all my life. Yes, this is the house. Where? Now, guys, what is the conjunction in this sentence? Ma'am, where? Where is the Where? relative pronoun? शिव, आपकी आवाज ऐसे कट रही थी, लेकिन आपने शायद where बोला है, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस where कैसे हुआ? Conjunction where तो हमारा adverb होता है और relative pronoun. Where is used to join two sentences. This is the house where I have lived all my life. So this is my house as well as I have lived all my life. Two sentences here. Exactly. And both are joined Connect where he by can using where. sentences को. Yes, right. चलिए. Sean, there are so many reasons. Next, pick the correct translation of ये मेरा नौकर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. This is my servant whom I was telling you about, or this is my servant, comma, I was telling you about. This is the house where I was born, right? Okay, it is my house, not yours. Yours में apostrophe s नहीं आएगा. YOURS. Possessive pronoun. Vishakha, please answer. Yes, ma'am. This is my servant whom I was telling you about. This is my servant whom I was telling you about. So guys, यहाँ पे भी जो हमारा whom है, WH word, वो conjunction की तरह काम कर रहा है, right? Whom, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. Whom, ठीक है? Who, जो, whom, जिसके. Ma'am, where we use to whom. TO2, okay, to whom हम जब लिखते हैं जब हमें पता नहीं होता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लेटर लिखा, जैसे आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पाइपलाइन में प्रॉब्लम है, तो आप लेटर लिखेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पर्सन का नाम क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू हुम इट मे कंसर्न. ठीक है, कंसर्न मतलब ये जिसका भी काम है उसके लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, और नीचे ये, ठीक है, उसको हम लिखते हैं टू हुम. When we are not know, or when we are not aware about the person we are writing about. Ma'am, Yes, so Priya. ma'am, yeah, this is my servant whom I was about telling you. बोलेंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है टेल, वो आई के बाद
हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के सीधे बाद मेन वर्ब आता है, इसलिए हम टेंसेस पढ़ते हैं ताकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Yes. यू हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और अबाउट, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. Oh, ma'am, there are a lot of reasons which I want to know her reason. Ask if she answers. Here comes the last slide, guys. Pick the correct translation of मैं खुश हूँ क्योंकि कल की छुट्टी घोषित करी गई है. I am glad due to tomorrow has been declared a holiday, or I am glad because tomorrow has been declared a holiday. Due to, because, which is the correct sentence. से आंसर नहीं करा। शरीफ, प्लीज आंसर। शरीफ सो रहे हैं अभी। मैम आई एम अनएबल टू सी मैम स्लाइड्स। अरे आपको तो स्लाइड का पंगा रहता है एग्जैक्टली। हर्षिका प्लीज आंसर। Yes, ma'am. Second one. I am glad because tomorrow has been declared a holiday. Due to कब यूज करते? Where do we use due to? यहाँ पे क्योंकि due to नहीं यूज होगा, so I cannot say I'm glad due to tomorrow has been declared. No, I am glad because tomorrow has been declared a holiday. So my question is, guys, come on, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, rack your brain and tell me where do we use due to and which sentences we use due to. किसी को नहीं पता? Ma'am, where there means where the sentence is negative form, means I don't go due to this reason. Very good, Soumya, very good. So guys, yes, in negative we definitely use due to, but अगर मैं कहूँ हम positive में भी use करते हैं तो, for example, he had to withdraw the money due to some emergency. So यहाँ पे due to because की तरह काम कर रहा है, because of some emergency भी हो सकता है. He had to withdraw the money because of some emergency, due to some emergency. And हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं his death was not due to any lack of care. I'm due to use when we are facing some critical situation. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शिव। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, such as I can't go outside due to rain. हाँ रीजन तो बिकॉज ऑफ रेन भी तो हो सकता है ना, तो ड्यू टू मीन्स ओइंग टू और बिकॉज। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ड्यू टू गलत है। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, आई एम ग्लैड ड्यू टू टुमारो हैज बीन डिक्लेयर्ड अ हॉलिडे, अगर यहाँ पे होता ड्यू टू टुमारोज हॉलिडे, टुमारो के बाद अपोस्ट्रोफी एस, कल की छुट्टी, वहां पे ड्यू टू आता। टुमारो हैज बीन डिक्लेयर्ड अ हॉलिडे इतने बड़े के साथ ड्यू टू नहीं आएगा। Ma'am, here due saying situation, ma'am. Sorry, what? Situation, due. Yes, this is a proper situation which is given जहाँ पे हमें because use करना होता है. If you want to explain something, that's when we use because. I am not able to take the class because I am going to London, for example. Wow. Right? So I am glad because tomorrow has been declared a holiday, not I am glad due to. Ma'am, please can you explain due to reason? Explain again. Means अगेन सेम चीज सौम्या, अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है वहां बिकॉज यूज करेंगे, ड्यू टू नहीं यूज करेंगे. yeah, I know, I understand, ma'am, but where I use due to? Where we use to, because की जगह पे ही यूज होता है ड्यू टू. आप इतना कंफ्यूज क्यों हो गई हो? No, means you explain due to that time I didn't hear properly, so. अच्छा. तो आपने जो मुझे
आंसर दिया था उसमें आपने बोला था नेगेटिव में यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अगर पॉजिटिव में यूज करें तो यस। सो गाइस ड्यू टू इज यूज्ड टू प्रेजेंट द रीजन फॉर अ नाउन। सिंपल एग्जांपल के लिए अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है, देयर यू आर सपोज टू यूज वो बिकॉज। For example, the traffic jam was due to a terrible accident. Right? Okay, thank you, ma'am. In this sentence, the phrase due to has used to present the reason for the noun. Noun क्या है हमारा? Traffic jam. So always remember this phrase is used to modify the nouns. तो ये ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, सिर्फ आप ये चीज ध्यान रखिए कि यहाँ सेंटेंस में ड्यू टू गलत है। ड्यू टू टुमारोज हॉलीडे सब ठीक रहता, क्योंकि वो नाउन को हॉलीडे को मॉडिफाई करता। बट यहाँ पे क्या है? हैज बीन डिक्लेयर्ड, व्हिच इज रॉन्ग। हैज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, डिक्लेयर्ड मेन वर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता ड्यू टू, नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन क्या है? हॉलीडे। तो अगर यहाँ पे होता आई एम ग्लैड ड्यू टू टुमारोज हॉलीडे, तो ड्यू टू लगता। तो मतलब ड्यू टू के बाद आपको सीधा क्या लेके आना है? नाउन। Noun. गया। Okay, thank you, ma'am. You are welcome. I hope this is clear with everyone. So, Yes, ma'am. example मैंने जैसे दिया था, Yeah, the ma'am. traffic jam was due to a terrible accident. तो due to के बाद मैंने सीधा क्या लिया? Terrible accident. Terrible हो गया हमारा adjective, accident हो गया हमारा noun. उसके बाद सीधा noun आएगा, verb नहीं आएगा। Because के साथ verb आ सकता है, has tomorrow because tomorrow has been declared a holiday. चलिए, that is all about today, guys. Harshika on top, very well done. Taroop, Sajil, Aniket, Harpreet, great guys. So इसी के साथ हमारा सेशन हो गया है, मतलब लेसन हो गया है समाप्त। तो अब क्या करना है? We have 15 minutes. बताइए। Ma'am, let's have some conversation. Join two sentences. Shiv, you are saying something. Yes, ma'am. How many conjunction we are used to join two sentences? How many conjunctions we use to join two sentences? There are many conjunctions. Ma'am, can you share with me? Coordinate, correlative तो अपने आप में होते हैं। मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं? मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। नेट पे एक बार मैं टाइप कर लेती हूँ। फैन बॉयज, तो फैन बॉयज तो करते ही हैं। इसके अलावा एंड, बट और ये वाले जो हैं सबऑर्डिनेटिंग में भी हैं, बिकॉज है, बहुत सारे हैं। मैं आपको कैसे बताऊंगी? मेरे पास लिस्ट नहीं है। देखिए, कंजंक्शंस का काम ही होता है ज्वाइन करना। सिर्फ कोरिलेटिव होते हैं जो अपने कोरिलेटिव भी ज्वाइन ही करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सारे मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकती। मैं आपको लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस दिखा सकती हूँ ऑनलाइन। लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस आ गया, बोलिए। हाँ, मैं एक मिनट। Don't tell me. What am I, ma'am? क्यों इतनी भीड़ करनी है? ओके, मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई? 1 सेकंड। गाइस, कुछ दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है ना? सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस। ये वाले फैन बॉयज जो है हमारे, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो। ठीक है, क्या नाम है? शिव। इसके बाद हमारे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनकी काफी लंबी लिस्ट होती है सबऑर्डिनेटिंग की, जिसमें आता है आफ्टर, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, even if,
even though, if only, if then, in order that, just, as, less, now, now since, now that, once, provided that. मैं थक जाऊंगी पढ़ते पढ़ते, इतने सारी. उसके बाद आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं. both and, either or, hardly, Ma'am? when, Not neither only but or. also. In here, no sooner is present. हाँ, no sooner is present, right? Then भी है ना, फिर no sooner और then, ये तीनों हमारे correlative conjunction. Very good, Soumya. Not only but also, whether or, the more, so, as, such, that, rather than. आप लोग अगर कंफ्यूजन है तो एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं. ये सारे हमारे कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. इन सभी का काम होता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना. ठीक है शिव? Ma'am, what is the meaning of flattered? Flattered means Flattered you means impressed. Impressing flattered. I'm someone. flattered by your voice. Yes, impressed. Then, ma'am, what is that example? The more wala example. See that example. The more का है? The more he flattered his boss, the more incentives he got. जितना उसने अपने बॉस को इम्प्रेस किया, उतना उसे इंसेंटिव मिला. वाओ. ठीक है? Yes. ऐसा क्या कर रहे थे बेचारे, फ्लैटर करने के लिए काम ही कर रहे होंगे. तो गाइस, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जिसमें दो कंजंक्शंस आते हैं और वो सेंटेंस को जॉइन करते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ और एंड. फॉर एग्जांपल बोथ द टीम्स एंड देयर कोचेस वर्कड हार्डर. either or, either eat the cake right now or it will be finished. Hardly, बहुत मुश्किल से, when, hardly had he reached the stop when the bus started. Right? Not only but also, not only you mug up for exam but also understand the basic concepts. Mug up का meaning क्या होता है? रट्टा लगाना. तो सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, समझना है हमें एग्जाम के बेसिक कॉन्सेप्ट को. Anything else guys? शिव, ये सारे लर्न कर लिएगा, ठीक है? बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए शायद हेलो इंग्लिश वाले में ये है नहीं. सबसे इजी होते हैं हमारे फैन बॉयज, क्योंकि इन्हें याद करना, इनके एक्रोनिम्स को याद करना बहुत इजी होता है ना, इसलिए. Anything else? Anything else guys? Nothing else, ma'am. All good? जी. We are left with some idioms. Could we do that? We are left with some idioms. Idioms, huh? We can do that. Let me search. किसी दिन ना रीडिंग का सेशन रखेंगे इवनिंग में. I have so many things, like so many slides for reading. Writing की भी बहुत है, understanding pronouns, Douglas narrative. Yeah, ma'am, we can do that. Conjunctions का भी मेरे पास बहुत अच्छा topic है. पूरी In slide. many evening speaking sessions, they used to do that. They discuss synonyms, antonyms. They discuss paragraph. Who is they? Now, Anisha ma'am and Eden ma'am. हाँ, तो इन्हीं की क्लास ले ली आप जाके, ठीक है? I do not have time for that. No, you have to now. चलिए. So we have already learned what are idioms, why use idioms, right? Now, piece of cake. Let's quickly revise. Face the music. You don't bite off more than you can chew. Rome wasn't built in a day. What? Who let the cat out of the bag? So let the cat out of the bag. And finger crossed. So a picture is worth 1,000 words. यहाँ तक हमने कर लिए थे. So next we have this. Please read. James was already planning what he would do with the money he would earn from his lemonade stand
next weekend. Mom said, don't cut your chickens before Count. they are hatched. Don't count your chicken before they are hatched. What does this mean? So guys, please understand what they're talking about and please tell me what is the meaning of this idiom. Don't count your chickens before they are hatched. बताइए. Ma'am, what is the meaning of It hatched? look like it looks like When her mom they is are like, building what? castle in the air. Okay. हाँ ठीक है, but थोड़ा सा come closer to the answer. Closer, so before doing any work, don't predict anything. Very good. Yes, exactly. So guys, कभी कभी क्या होता है, हम कोई काम करने से पहले ना बहुत कुछ सोच लेते हैं कि यार मैं लेमनेड स्टैंड लगाऊंगा तो मेरी इतनी सारी कमाई हो जाएगी, तो उस पैसे को मैं कहाँ लगाऊंगा. तो इससे कहते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. उनको काउंट मत करो जब तक वो हैच्ड नहीं होते. सो हियर इज द मीनिंग. प्लीज रीड. Give me my phone, please. Don't count your chickens before they are hatched. Don't be too confident in anticipating success before it is certain. Elicit a short creative story, 2-3 lines that shows how the idiom could have come to be. Right. So don't count your chickens before they are hatched. Don't be too confident in anticipate. Anticipate कहते हैं अंदाजा लगाने को. Anticipating success before it is certain. जब तक वो confirm ना हो उसके लिए अंदाजा नहीं लगाना चाहिए. Now what you need to do, elicit a short creative story, 2-3 lines that shows how the idioms could have come to be. चलिए आप लोग एग्जाम्पल में यूज कर लें, वही गनीमत है ना. करिए सेंटेंस, इस इडियम को सेंटेंस में यूज करिए. Ma'am, he was already started planning for the Goa trip, but he didn't have the permission of their parents. So he no, I think I completely. Okay. मजा नहीं आया प्रशांत, आपने ठीक से मैम मुझे भी नहीं आया, कुछ भी बोल दिया मैंने. May I? यस विशाखा. Okay. मैम मेरे He दिमाग is में लेकिन going मैं to- बना नहीं पा रहा सेंटेंस. He is going to establish his business, and he has already started buying office and all the furniture and I think he appliances. Yeah, appliances. I think he shouldn't count his chickens before they are hatched. Yes. Okay. So guys, hatched का मीनिंग क्या होता है? Born. तो अगर हमारे पास अंडा है और हम काउंट कर रहे हैं कि कल को इसमें से इतने 10 अंडे तो 10 मुर्गियां निकलेंगी, तो हो सकता है कि एक आध अंडा टूट जाए, खराब हो जाए, तो इससे हम हैच्ड बोलते हैं. बॉर्न. तो हमें चिकन्स तब तक नहीं काउंट करने चाहिए जब तक वो पैदा ना हो जाए. बॉर्न. What is the name? No. Ma'am, your sounds like that small kid from Pakistan. He was like Murgiya, ma'am. तो You मुर्गी. remember that kid, ma'am? अच्छा मुर्गी. Yes, ma'am. He was. पीछे देखो, पीछे वो पठान था भाई. इन लोगों का एक्सेंट ही अलग होता है पठानों का. Ma'am, you sounded like him. मैम शेख चिल्ली के विचार बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? शेख चिल्ली. What is that? शेख चिल्ली? शेख चिल्ली एक स्टोरी थी
जो चीजें हुई नहीं है और वो अपनी अपनी डाल पे बैठ के अपनी डाल काट रहा था, ऐसा कुछ। Manu Sheikh Chilli. No idea, no idea. Ma'am, I have a sentence. पढ़ाने पहले नहीं. Yes, Vishal. Ma'am, my friend was already started planning for Goa, and he was saying that he will go there. He will like do that thing, and then his parents didn't give him the permission. So we always like we should don't count our We don't chicken before. count our chickens before they are hatched. Yes, ma'am. Very good. Taruv, आपने hand raise किया था. Please go ahead. Yes. After buying a lottery ticket, Reena was making a list of those things that she would buy when she win the ticket. So his mother tell her, don't count your chicken. So his mother told her, don't count your chickens before they are hatched. Very well done. चलिए. But there was. Ma'am, we can also use this site. She has. धार्मिक कुछ या इतनी चीजें याद कैसे रहती हैं? Ma'am, can we use this site? Can we use this site बोले तो? Ma'am, this No, the no, site no. you are using. This is not a site. These are my क्या बोलते हैं उसको? पढ़ाने PPT, वाला ma'am. PPTs. Ma'am, portal. No, it's not a portal. I have my PPTs. Okay, ma'am. These are PPTs. Docs, Okay, okay. next we have something this. Someone please read. Dad had a Dad hard had a- time figuring. Okay, you can go. Please. Okay. read. Dad had a hard time figuring out how to use his new smartphone. You can't teach an old dog new tricks, Yes. he said after unsuccessfully trying to change his ringtone for 30 minutes. What does What it does mean? You can teach an old dog new tricks. बताइए. It's in negative sense that you can't teach an experienced person new things. Ma'am, I think it's a very judgmental statement. Yeah, exactly. This is ऐसा not नहीं है. actually My father true. has learnt everything. You know, मैंने एक आध बार बताया होगा अपने father को. But yeah, it's true. Facebook, and now he does everything on his own. So it is a bit judgmental, but yeah. Yeah, ma'am, it's Yeah, like that's why I said sometimes that it's hard to teach them. something negative. Yes. It's sometimes it's hard to teach. But so guys, the meaning is it is often difficult to get people to try new ways of doing things. Chaliye, use this in a sentence. You can teach an old dog new tricks. And why they said people here? They should. लोगों के लिए तो use करेंगे हम ये idiom. Ma'am, old dog, like old people. अच्छा. They do not give jobs until and unless you have done. Remember, I went for the interview for. What is the name of that course? Please ask to ma'am about payment. Guys, please answer. Ma'am, answer what? Ma'am, which answer you want us to make sentence or? Of course, I want you to use this idiom in a sentence quickly because we do not have time. Vishaka, please go ahead. Okay. Most of the office staff is at 45, and new manager is forcing them to learn new online course. I think it doesn't work because you
can't teach what is the idiom, ma'am? You can Uh, teach an old dog new tricks. New tricks, yeah. Ma'am, my friend was teaching his grandma about how to use Netflix from like past 30 minutes, and I was there and I said to him that you can't. Ma'am, what was the idiom? You can't teach An old dog new an tricks. old dog कितना new मुश्किल है? tricks. New tricks. Yes. Next idiom. Chloe is the name of this girl, Chloe. Ma'am, it was a correct sentence. Yes, it was. Okay. Someone please read. Chloe found it hard to keep a straight face when her brother kept making fun faces at her from across the room. What does it mean? To keep a straight face. This happens with me whenever I'm taking my class and my brother tries to make me laugh. So I cannot keep a straight face. It's really difficult. So guys, what is the meaning to keep a straight face? Very simple. I think there is no any expression on your face. No. Don't laugh. Yeah. Try to not laugh. Try to be serious. To keep a straight face means to be serious. Yes. A blank or Ma'am, what is serious. poker face? What is poker face? Sorry, what is? Poker face. मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो. Poker, ma'am. Poker face. Poker face. Yes, ma'am. Blank. Yes, ma'am. I think we use that for that thing. Poker face is when you are not giving any clue to the other person what you are thinking, how you are reacting. So yeah, that is called poker face. For example, when I asked her whether she's getting married or not, so she gave me a poker face. Okay, she did Yes, not ma'am. express anything, whether it was yes or no. So yes, a blank, mysterious, yeah, a blank or serious facial expression. Can you form a sentence using the above idiom? Ramesh was looking to examine new thing, but his son was trying to prove that you can teach an old dog new tricks. Very good, Sachin. I see you tomorrow. See you tomorrow session. See you in tomorrow's session. When Shubham does jesting, I can keep a straight face. True. Ma'am, actually, I'm facing this problem a lot these days. The last one, ma'am, the last idiom. Don't teach an old dog new tricks. Yes, Taru. After fighting, my friend tried to keep a straight face, but when I cracked a joke, she couldn't. Right. Right. Ma'am, may I? Yes, Soumya. When I want permission about to leave, then my teacher to keep a straight face to in front of me. Okay. Correct or not, ma'am? Your hand. Yes, ma'am. Ma'am, this is correct or not? सौम्या दोबारा बोलेंगे प्लीज. मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, वो पानी वाला आया था. Ma'am, were you asking something to me? नहीं, I was saying Vishakha. Vishakha was raising her hand. Good afternoon, Paul, Mohammed. Good afternoon, ma'am. Thank you for joining. Very good afternoon, Neha Chauhan, Lekhari, Manoj, Janvi, Ranu from Paul and Preeti Pragati. Janvi Singh, where is ma'am? Janvi ma'am is here. Asmara Krishna Reddy has also joined us. Pradeep Kumar, I'm seeing the chat. So the chat is showing me these names. We have here, so Deepak, Sumeta, Parvati, Lakshman, Sharda, Manali, Mysore, Rhythm Corps, No Name, Pratap Singh Rathore. Thank you everyone for joining. This is Reena signing in from Hello English. I hope all of you are doing fine. Please sit with your notepads and pens if you are interested in learning.
I am back again with another session of making us understand few related aspects. As you can see on your screens, this is the third placement of the prepositions, which is trying to say, ये कहाँ है? जब हमको पूछना है. Because sometimes you will be requiring to talk to people on the roads, might be in the bus, might be at home. तो पता नहीं कि हमें ये सवाल का जवाब कहाँ ढूंढना पड़ेगा किसी चीज को पूछने के लिए कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ है. तो वो घर में भी हो सकता है, आप रोड स्ट्रीट पे भी किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां अनजान आदमी दिख सकते हैं. हर किसी से भी कोई जगह पूछने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं. So before I start, let me just tell you, I am available on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 1 to 2 for all 5 days. Saturdays also I'm available at 11 o'clock in the morning. So please do join for all 6 days and continue to do some kind of a practice so that on Sundays, I think you are in a state to understand whatever has been done from last 6 days. Going ahead, let's get started. I hope all the pro learners are quite aware the rule of it. I'll be calling you people for answering and giving me some reasons of why this is happening. But those who want to know how can you talk to me directly in a class, that means we can join together on Zoom and sharing the pro invite with me. Please come and join. Most importantly, very good afternoon, Shilpa. Very good afternoon, Mysore Neil. Thank you so much for sending that message. Shivani Singh, very good afternoon. Go ahead and let us set it out. Janvi Singh, thank you for that good afternoon message there. There is a bank across the street. So आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं something which is saying ये कहाँ पर है? किसी ने आपसे पूछा. तो अब यह क्या हो सकता है? Somebody says, where is the bank? And you will have to tell the other person that the bank is that वो बैंक है ना, वो जो उस वाली गली की उस तरफ की तरफ तुम देखोगे उधर बैंक है. ये तो हिंदी में हो गया. अंग्रेजी में क्या? Preposition का इस्तेमाल करो. The preposition here is talking about the word across. So what is this word here? What is the statement that you are going to make? There is. There matlab this is something which is close to me. And if I'm saying there, that means I'm trying to send a location which is little far off. जो मेरी नजर से, नजर में तो हो सकता है, but वो बहुत दूर है, पास में नहीं है. तो there, क्योंकि आपने बैंक के लिए पूछा, वो एक ही यूनिट है, इंडिविजुअल एक ही चीज है, इसलिए वहां पे is इस्तेमाल लिया गया. There is क्या? एक बैंक है. कहाँ पर है? जो स्ट्रीट है ना, उसके अक्रॉस स्ट्रीट है. अब अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आप सपोज करिए ये रोड है और आप यहाँ खड़े हैं और बैंक जो है वो इधर है. अब यहां से आपको जाना पड़ेगा क्रॉस करके. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक फादर. आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा. तो आप उसको वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्रपोजिशन का अक्रॉस. सो यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड अक्रॉस. हमने कल सीखा है लोकेशंस को. सो यू नो व्हाट इज अ स्ट्रीट. I don't think so it's required. Now there is a specific street, so I'm using again the article the. So there is a street, there is a bank across the street. तो वहां एक गली है, वहां पर एक सड़क है. आप लेन नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रीट का काम नहीं ले रहे हैं. So there is a street. उस स्ट्रीट के अक्रॉस वहां पे आपको एक बैंक दिखाई देगा. So please remember it. हमको ये नया preposition का इस्तेमाल कर रहे हैं for understanding and letting the people know about the destination. It's too horror and terrible. क्या? What happened? Good afternoon, Sheikh. Something went wrong today? Asma, Sajid. What is horrible and terrible? I'm sorry. Mangal Kumar. There is a hospital across the street. Yes, Ravina, correct. I want to understand what is horror, Asma. Sajid, Asma, please type and tell me what is bothering you. Ankit Pandey, this is bothering my across the street, sadak ke us par. There is a bank across the street. तो across का मतलब हो गया उस पार. That means आपको एक पोर्शन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. हो सकता है स्ट्रीट के अक्रॉस हो सकता है ब्रिज के अक्रॉस. एक सेक्शन को जब आपको निकल के जाना. रिदम मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. आई एम नॉट ऑडिबल. हेलो, am my voice is coming na? Yes ma'am. Clear ma'am, your voice is clear.
Okay, there's somebody typing and saying, ma'am, you're not audible. Okay. In your profile picture, you are not wearing glasses. So, Asma, how does that bother you? Alpna Sharma, very good afternoon. Okay. So, across the street, we are talking here about something which is उस पार. उस पार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अब आपको ये बहुत सारे शब्द आपके सामने आए हैं. So please remember all this. Okay, Janvi Singh, there is a school across the street. Yes, Prabhat, correct. There is a school across the street. So, Fatima, could you please tell me the correct answer? Yes, Ravina, thank you for that answer there. Ravina, please come forward. Thank you, Rhythm. Fatima. उस पार, across. Across. एक बार थोड़ा जोर देके बोलो. Across. Absolutely. This is the pronunciation for. देखिए cross जितना साफ सुनाई देता है ना cross, उतना ही साफ A भी सुनाई देना चाहिए, तभी वो समझ में आता है. It's across. Okay, so we can do this. Is this bothering you? Somebody? Lot of people are typing. क्या हुआ? ज़्यादा डर लग रहा है क्या? This is what we wear in India. I'm sorry. Okay. Rajput, Suman, Krishna, Pratap, Rashmi, Satnam and Kriti have given us the correct answer. Let's go to the next and check this out. What does it say? उस पार का pronunciation नहीं, यहाँ पे spelling की जरूरत है. Tarla Rajesh Shah, thank you for joining. I hope you are joining me on the pro. Sharing the pro invite as required. You can check it out. Fatima, Krishna, Preeti, Rhythm, Rashmi and Pratap. Pratap, spelling क्या लिखूं? ACROSS. Absolutely. Thank you. Across. ACROSS. जिनको सीखना है उनको याद करा देते हैं. Cross. CROSS. Across. A. Ross. ROSS. जब भी स का साउंड लंबा खींचे या फिर any alphabet. Whenever you hear any alphabet which is getting stretched, समझ जैसे मैंने एक word बोला root. Ooh, that means the sound is getting repeated. Always that's a very beautiful understanding that whenever I have to write a word there and if there is a word which is getting stretched, हमेशा याद रखिएगा alphabet double ही होगा. Cross, root, oot. So then you can get it. The spellings can go correct for you people. Let's go to the next and try this out. Supermarket. What sentence, what will we write in English? Paul, would you please tell me the spelling of this? Can you hear me, Paul? Yes, ma'am. Supermarket की spelling बताओ. Supermarket. SUP PER market MARKET. शाबाश. M बोलो. aim नहीं. M. देखो मैंने supermarket. SUPERMARKET. अच्छा, और pronunciation करो. Supermarket. 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 शू नहीं, supermarket. Supermarket. Let it be. Let's go ahead. We'll try more. Pratap, Harpreet, Gautam, Fatima, Rashmi. These are very simple ones. There is a bank on this street. अब हम बात करते हैं. Suppose this is a book. Okay, so I take this book as a street. आपको मेरी किताब दिख रही है? Let me just check it. क्या दिख रहा है आप लोगों को? Let me go on the YouTube and check. I hope you all can see this book here. So this book हम एक गली की जैसे इसको लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ जहाँ पे आप एक पेन देख रहे हैं, right? And here you can see a remote, ठीक है? इन दोनों को जब हम साथ में रखेंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर इधर पेन है और इधर ये रिमोट है साथ में. बीच में लेन है. अब इस पेन को कहाँ जाना है? इसके पास में, रिमोट के पास में. तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसको पार करके जाना पड़ेगा. इसको पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैंने इस पेन को जो है इस किताब के ऊपर रख दिया. तो यहाँ पे वर्ड, अब प्रपोजिशन कौन सा आया? ऑन. अब मान लीजिए कि ये इसके ऊपर है, लेकिन
इस वाली जगह पे, इस सेक्शन के ऊपर, यहाँ जो आप मेरा पेन देख रहे हैं, इस सेक्शन की तरफ पर ही यहाँ पे कुछ एक दुकानें बनी हुई है, तो भी हम उसको ऑन ही बोलेंगे हम, क्योंकि वो जो पूरी लेन है ना, वो पूरी लेन का नाम ही रखा जाएगा, उस लेन के ऊपर ही है, इसलिए हमें उसका इस्तेमाल ऑन की जैसे करना पड़ेगा. वी आर सपोज टू यूज द वर्ड ऑन देयर, वेयर इट सेज देयर इज अ बैंक ऑन. अब कौन सी स्ट्रीट? इसकी, दिस स्ट्रीट, इस गली में एक बैंक है. सो कई लोग ऑन द स्ट्रीट की जगह इन द स्ट्रीट का भी इस्तेमाल करते हैं. देखिए मैं उसको गलत तो नहीं कह सकती, but as an English teacher I would strongly prefer that we use on, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं कि कोई भी चीज सरफेस के ऊपर होती है तो उसको ऑन ही बोला जाता है. कोई चीज अंदर होगी ना तो वो इन होगा. जैसे एक रेस्टोरेंट स्विमिंग पूल के ऊपर बना है, ठीक है, और एक आदमी स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा है. Did you get the difference? So I will say the person is in the pool and the restaurant is on the swimming pool. I hope you get the difference there. So it's a very minute difference, but it's a difference. So now, because now you can make a difference there, so try and use it on the street. Across to aap samajh hi gaye hain. You have understood, I think, very clearly. This is my street, and if I have to go from one place to this place, I have to cross this. इसलिए वो across word रखा गया है. अब केवल streets के लिए मत बोलिएगा. Across the road, across the bridge, across the mountain, across the school, वो कोई सी भी जगह को पार करके जब जाना होता है, उस जगह को बीच में रखो और preposition across को उसके पहले लगाओ. And that's the way you can use this preposition. अब हम सीख रहे हैं, is there a bank on this street? It's a question. सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे, क्या इस गली में कोई एक बैंक है? हाँ, वो एक बैंक है उधर उस गली के ऊपर. जवाब आएगा there is. So is there a bank? So now see, there is a question. Is there a bank? आप हमेशा याद रखिए, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन का एक पार्ट हम उठाते हैं आंसर के लिए. जैसे what is your name? My name is. यहाँ पर is there a bank, तो is is supposed to be the helping verb and this is making as a question. क्या? Is there? There is a bank on this street. या फिर there is a bank on the street, or there is a bank across the street. That is the way the answers are going to come. Let's understand it. कैसे बोलेंगे? Dhananjay, thank you for joining. Asma, you can't see my book. I try to see. It means ऊपर से क्रॉस करना है, ऊपर से अंकित. हाँ, बिल्कुल ये समझ लीजिए, आप ऊपर से क्रॉस करना है. Can you kindly show your book very closely in front of your camera, please? Asma, क्या करेंगे आप? मैम ये हिंदी थोड़ा बोल दीजिए ना. किस चीज के लिए बोलना है? ये हिंदी जो लिखा है ना अभी, ऊपर का जो हिंदी लिखा है. अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी. क्या इस गली में एक सुपरमार्केट है? ठीक है, यही कह रहे थे पॉल? हाँ, यस. यस. सुमन, आपको जवाब देना है या आप कुछ पूछ रही हैं? Ma'am, I have a question. So like we are using are with there as well, and sometimes we use is with there as well. So in which scenario we can use is, and in which scenario we can use are? ना सुमन, depending on the subject. मैं क्या बोलूँ? There are shops on the street. There is a shop on the street. So what am I focusing on? I'm focusing on the subject. There is actually focusing on the subject. अब आपका subject अगर plural है, एक से ज्यादा है, तो there के साथ are लगाइए, और अगर आपका जो subject है वो singular चल रहा है, तो there के साथ is लगाइए. Okay. Good question there, Suman. चलिए. I hope it is clear. कोई issue नहीं है ना? जैसे there is a teacher on Hello English which comes at 1 o'clock. ठीक है? And there are teachers to teach English at Hello English. तो मैंने टीचर्स सब्जेक्ट रखा तो आर का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब मेरा आर हो गया, और मैंने जब अ टीचर किया तो मैंने इज इस्तेमाल किया. In short, we can say there can be used with both is and are. Like
देयर कैन बी यूज्ड, बट बिकॉज सुमन अब आप थोड़ा आगे समझने लगे हैं तो आप इसको ऐसे पकड़िए कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा हेल्पिंग वर्ब है। थोड़ी बारीकी से समझेंगे तो गलती कम होगी। कई बार आप दो की जैसे चीजें दिखाई देने वाली सिंगुलर चल रही है, वहां पर कंफ्यूज हो गए तो आप सब्जेक्ट पे ध्यान, आप हमेशा एज एन इंग्लिश टीचर दिस इज ऑलवेज आई हैव बीन रिटरेटिंग, सब्जेक्ट पे ध्यान दो, सब काम हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। आई कुडंट आस्क, अब आप आ जाओ सुमन, इसका भी आंसर का जवाब दे दो बिकॉज आप और हम ही बात कर रहे थे। प्लीज कम। So the answer will be, is there a supermarket in this street? Will you ask like this, Suman? Is there a supermarket in this street? Okay, can we have a better pronunciation for this? Suman, thank you. Anyone else would like to say this sentence? Yes, Krishna. Is there a supermarket in this street? Okay, thank you, Krishna. Thank you. Fatima, you want to try? Say. Is there a supermarket on this street? Okay, ठीक है, perfect. There is this phone number 35504. Is that Dinesh? Yes, Dhananjay, you want to say something? No, ma'am. Okay, I can see Gautam has also joined us. Thank you, Gautam, for joining. कहाँ से जुड़े हैं Gautam? Ma'am, I am from Madhya Pradesh. Okay, you have joined me for the first time, I think. Yes, ma'am. Okay, pleasure. Thank you and stay with me. थोड़ा सा ट्राई करिएगा। मैम योर बिहाइंड स्क्रीन इज ब्लर। प्रभात वो ब्लर ही रखती है पीछे की। गौतम थोड़ी देर रुकिएगा, आप थोड़े अकस्टम हो जाएं हमसे, फिर आपको पता चल जाएगा हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? सो थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? इज देयर अ बैंक ऑन दिस स्ट्रीट? क्या इस गली में कोई बैंक है? आर देयर एनी बैंक्स ऑन दिस स्ट्रीट? सुमन, आपका आंसर आपके सामने है। Yeah, ma'am. Okay, तो आप समझ गए। ये बात पे मैं बहुत काफी देर बात कर चुकी थी बिकॉज सुमन ने पहले पूछ लिया था, बट आई डिडंट वांटेड टू स्पॉइल द मूड इन द सेंस कि मैंने अभी पूछा और मैम कह रही रुक जाओ आगे बात करेंगे। तो क्या समझे हम, बस इतना सा समझना है। इज देयर अ बैंक? BANK सिंगुलर, BANKS। देखिए सवाल भी सुमन नहीं, मैं सबसे कह रही हूँ, सवाल भी फिर वैसे ही बनेगा। Are there banks on the street? Is there a bank on the street? मतलब जब हम इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में पूछ रहे हैं ना, जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरा जो सवाल भी बनेगा ना, उसपे भी मुझे हेल्पिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा। So both ways we are going to practice it. If I am supposed to answer somebody's question, there are banks on the street. There is a bank across the street. So then play with this small little subject, but it is a major change there to understand. सुमन की भाषा मुझे बेहतर लगी कि देयर का इस्तेमाल आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको याद करना शायद आसान रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पूर्णिमा, इट्स ओके, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही बात कर रही हूँ, और जब मैं नहीं करती हूँ तो मेरे पास कॉल है जो मुझे याद दिला देती है, so that I take care of all the students on the chat as well. Please come and give me the answer. ये जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए मैं पढ़ रही हूँ। क्या इस शहर में कोई अच्छे रेस्टोरेंट हैं? Pen can go, एक सेकेंड, pen can go to near the remote across this book is right, ma'am. Pen can go to near नहीं हो सकता। Pen can go near the remote across this book बेहतर होगा। टू लगाने की जरूरत नहीं है। रवीना जहांगीर, yes, Mahipal, the answer is correct. Thank you for joining. Zahara Seldi, thank you for joining here. Priya, thank you for joining. And Gautam, can you give me the correct answer? See, Sheikh Saiza, आपने लिखा है are there any bank on this street? तुमने are का इस्तेमाल किया है ना शेख, तो are there any banks आएगा आपका वहां पे। So Neha Chauhan has given us